চৰকাৰে সদায়ে মিচিং সমাজৰ লগত হাতত হাত ধৰি একেলগে কাম কৰিব। জাতিটোৰ অধিকাৰ আৰু অসমৰ অধিকাৰ আমি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে একেলগে কাম কৰিম। मैं आसाम भूमि में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को स्वागत करता हूं। हमारे जो मिसिंग समाज का आसाम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आसाम का साहित्य, आसाम का संस्कृति, आसाम के इतिहास में मिसिंग समाजों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के रहा है। मैं एक बात का आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारा बीजेपी सरकार मिसिंग समाज का अधिकारों के लिए, अपना संस्कृति के लिए हाथ से हाथ मिला के एक साथ हम लोग काम करूंगा। मैं आजिर सभाते आमार दनीय पलो संस्कृति रक्षणाबेक्षणर कारणे आरु दनीय पलिय समाजखনৰ आर्थ सामाजिक गवेषणा इतिहास সকলো ক্ষেত্ৰতে কাম কৰিবলৈ মই আজিৰ সভাতে দনীয় পলু সমাজখনৰ কাৰণে আৰু 10 কোটি টকা মই ঘোষণা কৰিছো, যাতে ইয়াৰ ইতিহাস আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি কাম কৰিব পাৰো। পুনৰ এবাৰ এই মিচিং যুৱ মহোৎসৱত আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দিছো। আজি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, কেতিয়াবালৈ আমি নিশ্চয় মনত আশা ৰাখিম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি মিচিং যুৱ মহোৎসৱলৈ নিশ্চয় কেতিয়াবাকৈ আমি লৈ অহাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি ইয়াত উপস্থিত